caution, livestock. What is up guys, and a very good morning from Northern Ireland. Today is day 10 of our road trip. और अगर आपने पहले के 10 vlogs नहीं देखे या पहले की ट्रिप नहीं देखी है, प्लीज़ गो बैक एंड चेक दोस आउट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. हमारे एयरबीएनबी में कॉमन किचन एरिया रहता है, कॉमन डाइनिंग एरिया रहता है, एंड एक घर में समझो 3-4 अलग अलग रूम्स हैं जहाँ पे 3-4 अलग अलग लोग रहते हैं, एंड ये सब शेयर्ड एरिया है. एंड होस्ट जो है वो आपको फ्रिज में ब्रेकफास्ट का सामान जैसे ब्रेड है, टोस्ट है, मिल्क है, जूसेस है, बिस्किट्स है, वो सब दे के जाता है. एंड इट इज़ कॉमन फॉर ऑल टू यूज़. सो आई थिंक एयरबीएनबी का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है. तो बस आई थिंक ब्रेकफास्ट करेंगे फटाफट से. एंड टुडे वी आर गोइंग ऑल द वे ऑन द नॉर्दर्न शोर ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड, जहाँ पे वी आर गोइंग टू सी कैरिक-a-Rede रोप ब्रिज एंड जायंट्स कॉजवे एंड और बहुत और छोटी छोटी जगह है. सो या आज का वीडियो काफ़ी वैसे विजुअली काफ़ी अपीलिंग होने वाला है. सो कंटिन्यू वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस ऑन द रोड. सो गाइस आज का फर्स्ट स्टॉप ऑन द कोस्टल कॉजवे रूट. नॉर्दर्न आइलैंड में जो पूरा नॉर्थ रूट है जो हम लोग को पूरा कोस्ट पे लेके जाता है इज़ कॉल्ड एज द कोस्टल कॉजवे रूट. एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप्स है, बट वी आर डिसाइडिंग टू ओनली गो एट 3 स्टॉप्स बिकॉज एक दिन है हमारे पास एंड जो हम लोग को ज़्यादा अपील कर रहा है वहाँ पे रुकेंगे. फर्स्ट स्टॉप इज़ this place called as Mussenden Temple. This place was made by Mr. Patrick Harvey. है ना? Frederick Harvey. Earl of Derry. He was the Earl of Derry. Earl is a title in royal family. तो उसको रॉयल्टी और ग्रैंडियर और जो शोशा बोलते हैं ना आज के ज़माने में, उसका बहुत शौक था. तो उसने ये एरिया बनाया था टू मेक एवरीथिंग ग्रैंड 300 साल पहले. एंड अभी भी ऑनेस्टली इट इज़ ब्यूटीफुल. ओपन एरियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, बिल्डिंग्स भी काफ़ी ग्रैंड है, एंड एक टेम्पल बनाया है सामने विच इज़ राइट ऑन द क्लिफ. मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है. So guys, the next stop on the coastal causeway route is this place called as Giant's Causeway. Giant's Causeway is a very popular destination among all travelers coming to Northern Ireland. That is because यहाँ पे जो stone formations हैं, they are a result of thousands and thousands of years of volcanic activity. And ये जो stone formation है वो बहुत characteristic hexagonal shape में है जो दुनिया में स्कॉटलैंड और यहाँ के अलावा कहीं पे नहीं मिलता. एंड इसके अलावा यहाँ के लोकल लोगों ने उसको अलग अलग स्टोरीज दी है. सम पीपल से दैट दीज रॉक फॉर्मेशंस आर अ रिजल्ट ऑफ 2 जायंट्स फाइटिंग, वन फ्रॉम आयरलैंड, वन फ्रॉम स्कॉटलैंड. एंड वंस यू वर देयर वाज अ गाइड विद अस जिसने हमको ये पूरा स्टोरी अच्छे से समझाया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक्सेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. चेक इट आउट. Also a Scottish giant who lives in the Isle of Staffa known as Ben and Donner. And Ben and Donner and Finn had never met, but they really didn't get on with each other. They were always shouting at each other across the sea. Because as I've said, Scotland isn't too far away. So a giant with a big deep voice could shout very easily across the sea. So they were always arguing about something and they were really not the best of friends. So आज का next stop is this place called as the Dark Hedges. Refrigerator. If you guys are big Game of Thrones fans, तो you might be knowing कि most of the shooting, not most but काफ़ी shooting Game of Thrones का यहाँ पे Northern Ireland में हुआ है, जिसमें one of the places is this place called as the Dark Hedges, which was used as showing the King's Road from Winterfell to King's Landing.
जहाँ पे फर्स्ट सीज़न में वो लोग दिखाते हैं अच्छे से कि कहाँ पे वो लोग जा रहे हैं. सो इफ़ आई शो यू द शॉट्स आपको थोड़ा अंदाज़ा आएगा. सो लेट्स गेट टू दैट प्लेस. यहाँ से अराउंड 5 मिनट वॉकिंग है, जाके देखते हैं. चलो. आज थोड़ा चेंज करना पड़ा बिकॉज वहाँ पे रोप ब्रिज पे वेदर इतना खास नहीं था, पूरा क्लाउडेड था. तो हमको लगा कि अभी जाके मतलब नहीं है, तो थोड़ा प्लान चेंज करके वहाँ पे कल जाएंगे. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू द रोप ब्रिज बिकॉज आज नहीं हुआ. एंड टू अ स्मॉल टाउन कॉल बैलीगैली, जिसका ड्राइव Ballycastle to Ballygalley is voted as world's second most beautiful drive after LA to San Francisco. तो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि वो ड्राइव बहुत अच्छा होने वाला है. बिकॉज देयर इज लिटरली गोइंग टू बी रोड ऑन वन साइड, ओशन ऑन द अदर साइड. यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट. लॉट्स ऑफ ड्रोन शॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल शॉट्स कमिंग योर वे. बिफोर आई गो, आपको ये आज के एयरबीएनबी का टूर तो देना ही पड़ेगा. चेक दिस आउट. Today we are going to this place called as Carrick-a-Rede rope bridge. प्लान एक्चुअली कल जाने का था, बट वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब था. बट टुडे इट्स नाइस एंड सनी, सो वी आर जस्ट हियर इन आर एयरबीएनबी. यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम हियर. अभी थोड़ा टाइम में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ़िलहाल. ब्रेकफास्ट इज़ इंक्लूडेड, मतलब जो होस्ट है हमारे, वो हमारे ऑलरेडी सीरियल्स, ब्रेड, बटर, जैम्स, मिल्क, ये सब ला के रखते हैं. दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट एयरबीएनबी. एंड इफ़ यू गाइस वांट टू स्टे एट एयरबीएनबी, प्लीज़ यूज़ द लिंक in the description box below. Sign up with that and you will get a 2,200 rupees discount on your first booking. So please sign up using that link. Today we are driving across one of world's most scenic routes. It has been consistently voted as one of the best routes to drive in all of the world. मतलब ये रूट में आ जाते तुम्हारा Amalfi Coast in Italy, your LA to San Francisco route, and this route from Ballycastle to Ballygalley. So it's going to be a beautiful ride. You don't want to miss out on that, and the drone shots are going to be epic. So पहले breakfast दिखाता हूँ आपको, and then let's get this road trip started. Thank you. 2 adults. Yep. There you go. Thank you. Thank you. Thank you. So let me tell you a little bit of history behind this bridge. Back in the day, ये एरिया में फिशिंग बहुत हुआ करता था, and specifically for this fish called as the Atlantic salmon. And back in the day, वो fishermen ने यहाँ पे हट बना के ये ब्रिज बनाया था, which was just made of ropes and wooden planks. And ये लोग ये ब्रिज क्रॉस करके फिशिंग करते थे. बट ये एरिया इतना फेमस हो गया कि इतने लोग आते थे फॉर फिशिंग दैट द एटलांटिक सैल्मन वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. एंड ये चीज़ फिर गवर्नमेंट को पता चली, एंड दिस एरिया हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द नेशनल ट्रस्ट, जो यहाँ की कंजर्वेटिव एजेंसी है. एंड सिंस देन दिस हैज़ जस्ट बिकम वेरी सीनिक एंड अ टूरिस्ट अट्रैक्शन. बस ब्रिज जाकर आया, ऑलमोस्ट पूरा जाके आने को 1.5 घंटा लगता है. इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ऑनलाइन स्लॉट्स होते हैं, टाइमिंग्स रहते हैं जो तुमको ऑनलाइन बुक करने रहते हैं, वरना फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट समझो 2-3 घंटे के वेटिंग वरना हो जाता है. तो पहले से प्री बुक करके आना बहुत ज़रूरी. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रश थी बहुत अच्छी जगह, बट देयर वर सो मेनी पीपल. Like to cross the bridge, it would take you like at least 10 to 15 minutes of waiting. Right now, we will be driving across one of the most scenic driving routes in all of the world. So super excited for that. So abhi bas we are doing that, and bas just wait for some epic drone shots. सो गाइज वो रोड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. इट्स 30 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड लिटरली इट इज़ स्टिकिंग राइट टू द अटलांटिक ओशन. एंड इट्स नॉट इवन ऐसा नहीं कि थोड़ा दूर है, कम्प्लीटली नज़दीक है उससे. एंड थ्रू आउट द ड्राइव दिस नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स आपको पूरा अटलांटिक ओशन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलने वाला है.
एंड ये स्ट्रेटेजिकली मैंने प्लान किया था बिकॉज आई वांटेड टू बी ऑन माई लेफ्ट, इफ़ यू ऑन द राइट तो फिर इतना अच्छा व्यू नहीं मिलता है. दैट इज़ वाई रूट ऐसे ही प्लान किया था कि ऊपर से नीचे आए हम लोग, सो ये व्यू एकदम अच्छे से मिले. सो नेक्स्ट 30 kilometers एन्जॉय. आई एम गोना गेट एज मेनी ड्रोन शॉट्स एज पॉसिबल. सो या कंटिन्यू वॉचिंग. How is it driving here? ड्राइविंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज कॉन्स्टेंटली यू कैन जस्ट सी द ओशन ऑन योर लेफ्ट एंड ब्यूटीफुल हाउसेज, ब्यूटीफुल पार्क्स एंड ब्यूटीफुल ईटरीज ऑन माई राइट. एंड कॉन्स्टेंटली आई एम सीइंग बाइकर्स गोइंग फुल स्पीड पे, मतलब एक से एक बाइक्स. देयर इज़ द निंजा H2 हायाबुसा है, BMW 1000R है. मतलब दिस बाई फार आई थिंक सब लोग यहाँ पे सिर्फ ये रूट बाइक करना आते हैं, मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा है. बिकॉज ऑनेस्टली रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड द ड्रोन शॉट स्पीक्स फॉर देम सेल्स एक्चुअली बिकॉज एज यू कैन सी द रोड इज़ ऑल्सो परफेक्ट, द रूट इज़ परफेक्ट, सेटिंग इज़ परफेक्ट एंड आई वुड हैव जस्ट ओनली थिंग आई वुड हैव आस्क्ड फॉर इज मे बी लिटिल सनलाइट सो दैट ओशन पूरा ब्लू हो जाता था. एंड थोड़ा ओवरकास्ट है, दैट इज़ वाई ओशन थोड़ा डल, थोड़ा ग्रे लग रहा है. बट इफ़ इट वाज सनी, पूरा ब्लू होता था, दैट वुड हैव मेड इट इवन बेटर. Perfect, yeah. या सो बस आई थिंक 13 more kilometers टू आवर हाउस. हमारा हाउस भी ऐसे एक सिमिलर टाउन में है कॉल्ड एज Ballygalley. तो बस वी आर ड्राइविंग देयर एंड एन्जॉय द ड्रोन शॉट्स गाइस. So you're missing your bike or not? I'm missing my bike a lot. Would you would have preferred driving I here? would have preferred riding my bike over. Riding your bike? I would have preferred riding my bike over here rather than in a car. Seriously? Because बाइक पे ये ऐसा रास्ता राइड करना इज़ अलग फीलिंग ओनली. गाड़ी में यू इन द कम्फर्ट डेफिनेटली, बट बाइक का मज़ा ही कुछ अलग है. मे बी नेक्स्ट टाइम मे बी कोई बाइक राइड यहाँ पे करेंगे. Yeah, and when we don't carry so much luggage. So that brings us to the end of today's video guys, because abhi we've just come out, we have got some Chinese takeout and बस अभी हम Airbnb में जाके बस थोड़ा relax करके we are just gonna end the day because it has been a really tiring day. I hope you guys like this video. If you guys did, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to give it a big thumbs up and tell me what you thought about this drive in the comment section below. I'm gonna go home now and before that I'm just gonna enjoy this view. गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्क की है and behind me is this beautiful ocean view and यहाँ पे there is the small town of Ballygalley. So yeah, that is it for now. Until next time, keep on traveling. See you guys soon.